Yes. Yes. Lucy, please start. Aryan, Am I audible? yes, you are. आरज़ू बस यही है मेरी आरज़ू बस यही है मेरी हर एक सांस देश के नाम हो जो सर उठे तो सामने तिरंगा हो और झुके तो वतन को प्रणाम हो A splendid afternoon to our vibrant student community, esteemed faculty, and everyone passionate about our nation's legacy. As we commemorate the 77th anniversary of India's independence, our hearts are filled with gratitude and pride for the relentless struggles, unparalleled sacrifices, and the unyielding values that have shaped our India. Am I not audible? I am Aryan Rana, proudly representing Rajdhani College, and it is a privilege to be your host in this evening for today's exclusive webinar orchestrated by the Dadhichi, the Competitive Society of Rajdhani College, University of Delhi. Today's discussion revolves around upholding values, commemorating history, and fostering unity, a theme that resonates deeply with our shared history and the spirit of our Independence Day. Reflecting upon our nation's post independence journey, it is a saga of challenges faced and milestones achieved, showcasing the resilience and unity of people. Before we delve into today's discourse, I'm reminded of Netaji Subhash Chandra Bose's profound words. Independence of India is not the end of a struggle, it is the beginning of a new era. Joining us to further unravel this theme and share invaluable insights is none other than Mr. Vivek Atray, a beacon of inspiration and a reservoir of knowledge. With a multifaceted career that includes administrative services, motivational talks, and authorship, Mr. Atray stands as a testament to a leadership and vision. Now, as we transition into the heart of our discussion, it's an honor to provide a platform for students from our very own community. Before starting today's webinar, I would like to invite Vidya for her speech. Thank you so much for providing me with this opportunity to extend my words on this auspicious occasion. I'd like to begin my speech. So, in the grand tapestry of history, the assertion rings true. Independence is not a commodity that is bestowed upon us freely, it is a treasure that is acquired through the constant sacrifices of our very own soldiers. It is through their indomitable spirit, their unwavering commitment, and unparalleled sacrifice that the currency of sovereignty is gained. As we gather here to contemplate the intricacies of this profound reality, we are reminded that the linger of liberty carries the weight of those who bore its cost on their shoulders, writing their names in the annals of history. In the crucible of conflict, soldiers emerge as the paragons of determination and courage, their indomitable spirits bolstered by an unyielding allegiance to duty and honor. These intrepid individuals traverse the tumultuous terrains of battlefield. They exemplify the zenith of metal as they navigate through the complexity of warfare.
Behind the parade formations and the precision drills, there lies a bond that is forged in the crucible of shared experiences. In the heart of the barracks, the camaraderie formations, creating a second family that is always present for each other in the time of uncertainty. And it is this unity that fuels the unrelenting march forward, even when faced with the darkest of challenges. The battlefield is a theater of chaos and order that bears the witness of tableau of soldiers maneuvering with astute stratagems and consummate skill. Arranged in the regalia, adorned with the emblems of allegiance, they march to a symphony of duty, embodying the ethos of fortitude in every disciplined step. There are contributions and sacrifices too that are not much talked about. I am here to discuss some of those. The Manipur ambush of 2015. In Manipur, an insurgent group attacked the Indian Army convoy, leading to the death of around 18 soldiers. Such is the patrol attack in Uri in Jammu and Kashmir, leading to the death of 88 soldiers. The avalanche in Himachal Pradesh in 2017 that stuck in high altitude army post leading to the death of around 10 soldiers. Such is the Kupwara attack, the Taiwan helicopter attack, the petrol boat accident and what they have contributed. They have contributed a lot, like the Operation Polo to IMS Sindhu Rakshak to Operation Cactus. And not only this, they also opened a school in Dharavi that is completely free to provide education to underprivileged children. Also, I'm very proud when I say this, that they are not only contributors during their life, they also do contributions in the afterlife as they open up posthumously transplantations of organs. And this makes me say soldiers are the real saviors of our country. At last, I just want to say that amidst the martial splendor, it's crucial to remember that these soldiers are not mere pawns in the geopolitical chess game, but individuals whose lives are woven into the intricate fabric of the society. Beyond their identity, they bear the complex mantle of human emotions and vulnerabilities. Beneath the weight of armor, beneath the rigors of their responsibilities, pulses the heart of a person who seeks solace in the embrace of a family. Thus, let us acknowledge their sacrifices, both seen and unseen, both heard and unheard. They offer the altar of safeguarding ideals and securing our shared future. With this, I end. Jai Hind, Jai Bharat. Thanks, Vidya. Soldiers really are the real saviors of our country. Now, I would like to call upon Sashank to share his views on this topic. Am I visible and audible properly? संसाधनों का सेतु बनाकर मैं विकास करना चाहता हूं। जी हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहता हूं। प्रत्येक गरीब बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिलाकर उसे शिक्षा का भागीदारी बनाना चाहता हूं। जी हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहता हूं। आरक्षण के इस दौर में बेटी को उसकी माँ के गर्भ में आरक्षण दिलवाना चाहता हूं। जी हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहता हूं। नमस्कार, माननीय मुख्य अतिथि श्रीमान विवेक आत्रे जी, दधीची संघ के सभी समस्त पदाध्यक्ष एवं सदस्य एवं उपस्थित सभी श्रोता, मैं शशांक राजधानी महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय से आज आप सभी के बीच आधुनिक भारत के युवा और राष्ट्र निर्माण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। यदि हम इतिहास के पन्ने खोलकर देखें तो हम पाएंगे कि आज तक जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, चाहे वो राजनैतिक हो, सामाजिक हो, वैज्ञानिक हो या फिर आर्थिक हो, उनमें युवाओं का ही हमें अहम योगदान देखने को मिलेगा। यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो आदि गुरु श्री शंकराचार्य से लेकर महावीर एवं गौतम बुद्ध ने भी अपनी युवावस्था में ही संसार को सदाचार का पाठ पढ़ाया।
भारत एक युवा देश है और युवा ही भारत का भविष्य है। और जब भी हम युवा शक्ति की बात करें तो सरदार भगत सिंह का नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। सरदार भगत सिंह वो महान हस्ती है जो मजहब 23 वर्ष की उम्र में ही देश के लिए शहीद हो गए। और ऐसे ही युवा देश का विकास और निर्माण करने के लिए सक्षम हैं। लेकिन वो कौन युवा है जो देश का निर्माण करेंगे? मैं आप सभी से पूछता हूँ कि क्या ये वो युवा है जो दर दर रोजगार के लिए ठोकर खाता है, या फिर ये वो युवा है जिसकी प्रतिभा और कुशलता भ्रष्टाचार के कदमों के तले कुचल दी जाती है, या फिर ये वो युवा है जो अपने देश में उसकी कुशलता और प्रतिभा को उचित सम्मान ना मिलने पर दूसरे देश में जाकर अपने देश को छोड़ने के लिए विवश हैं? ये कौन सा युवा है और कैसे भारत के विकास में अपना योगदान देगा? आज के समय में भारत के युवाओं को उन्नत और आदर्श जीवन की आवश्यकता है। और मुझे याद है और यकीन भी है और विश्वास भी है कि भारत के युवा एक बार फिर से खड़े होंगे। सिंधु सभ्यता की भव्यता के साथ, विक्रमादित्य के विक्रम और चाणक्य की बुद्धि विवेक के साथ जागृत होगी राष्ट्र भाव की भावना मेरे मन में, आपके मन में और संपूर्ण भारत के मन में। और अंत में कुछ पंक्तियां। ये पृथ्वी और यहाँ हम एक मेहमान हैं, इसको कुछ और अच्छा बनाइए, सदाचार से भरपूर, भावपूर्ण, भाईचारे से युक्त उन मेहमानों के लिए जो आपके बाद यहाँ आएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु मंगलम। धन्यवाद। शशांक, आपके शब्दों ने हमें अवश्य ही छू लिया। बेटी को उसकी माँ के घर में आरक्षण दिलवाना चाहते हैं। भारत और उसके युवा अवश्य ही एक बार फिर खड़े होंगे। अब मैं आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए आप सभी को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारे आज के स्पीकर मिस्टर विवेक अत्रे जी से। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने माइक्स को बंद रखें ताकि हम ऑप्टिमम साउंड क्वालिटी इंश्योर कर सकें। Moving forward, I would like to welcome Dr. Barun Kumar Mishra, the visionary convener of our Dadhichi Society, to shed further light on today's topic. And welcome, sir. Sir, please. Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. There is some problem there in my video, so it is not showing a photo actually. Anyways, on behalf of Dadhichi, the competitive society of Rajdhani College and Rajdhani College itself, I welcome you, sir, Sri Vivek Atray ji. Hope your word of wisdom will inspire my aspiring students who wish to make their career better, and maybe they aspire to become civil servants. Some of them aspire to become to go in some other areas of greater importance. So once again, sir, I welcome you to this platform of Rajdhani. Now to you, sir. Thank you. Thank you, Dr. Mishra. Your insights invariably deepened our understanding for today. Now it's time to draw focus on our distinguished guest. From spearheading initiatives that propelled Chandigarh to the forefront of tourism and IT, to his contribution in the civil services and enlightening minds with his motivational talks, Mr. Vivek Atray's journey is awe-inspiring and worthy of admiration. So, with the spirit of enthusiasm, let's offer a resounding virtual applause and heartily welcome Dr. Vivek Atray. Thank you. Should I begin? Yes, sir, please. Okay. Thank you. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया, और डॉक्टर बोरन मिश्रा, who is probably from Kolkata, as I can see from his name. Very nice to be in your company also. Thanks for the warm welcome.
और सभी स्टूडेंट्स जो बोले अभी तक बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोले और बहुत ही दिल से बोले। सबसे अच्छा मुझे लगा कि कोई ऊपरी या आर्टिफिशियल बात नहीं कर रहे थे। इट वाज वेरी वेल सेड। नाउ आई एम अ स्पीकर, सो आई स्पीक एंड it is my probably my first of the day today, but every day I speak on some topic or the other. No, it's probably my second because I went to an Independence Day function in the morning. मैं आपको एक शेयर कर रहा हूँ कि आप सोचेंगे मैं कितना बड़ा हूँ। 30 years ago I was the young SDM of Kalka. आपको इंस्पायर करने के लिए बोल रहा हूँ। और आप में से कई यूपीएससी या सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं। And I was in the Haryana Civil Services at that time. और मैं 30 years ago on 15th August in 1993, I became the first SDM of Kalka subdivision, which was a new subdivision on that day, on 15th August 1993. So today, 30 years was celebrated in that Kalka subdivision on 15th August, today, the Independence Day. And during the celebration I was also asked to speak. तो वो एक recognition भी हुआ और एक speech भी हुआ सुबह। कल मैं मसूरी में था, जो कि आपको सबको जाना है जिसके लिए सिविल सर्विसेज के लिए। और मसूरी में I was speaking to the Maldives officers. Maldives और बांग्लादेश और कंबोडिया जैसी कंट्रीज के ऑफिसर्स आते हैं मसूरी ट्रेनिंग के लिए। और ये जो मैं जहाँ पे स्पीच देता हूँ उसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। इट इज सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ LBSNA एंड इट इज आल्सो अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल DOPT, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो कल था। मैं सुबह अब वापस आया हूँ चंडीगढ़ और आज ये कालका में मेरा प्रोग्राम था। तो ये चीजें हैं अभी तक जो हुई हैं। तो अभी आई एम विद यू। आई वांट टू विश यू फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। और ये जो स्वाधीनता दिवस है इसका क्या मतलब है, क्या इसका तात्पर्य है, क्या इसका असल में क्या हमें इस दिवस पे सोचना चाहिए, उस बारे में हम बात करेंगे। और ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स ने बताया ये बिल्कुल सही कि जो हमारा इंडिपेंडेंस है ये कोई, पहली बात तो टेरिटोरियल नहीं है। टेरिटोरियल जो इंडिपेंडेंस है उसके रखवाले हमारे देश की फौज है। They are at the borders, and the border security force along with the armed forces, the air force, the navy, they take care of the border. And independence for them also means security of our borders with other countries. Now we have a lot of pride and we have a lot of happiness that we are being guarded by these very fine officers and men and women of the Indian Army and armed forces. लेकिन हमारा क्या इसमें कर्तव्य है? What can we do for the country? We are not at the border. We are not in a symbolic position जहाँ पे हम कोई झंडा फहरा रहे हैं या लहरा रहे हैं, या हम कोई दफ्तर में बैठे हैं। और मैं भी रिजाइन कर चुका हूँ तो मैं भी दफ्तर में नहीं बैठा हूँ। So we are normal citizens of this great country, but what can we do and what does independence mean for us? असली बात ये है। मैं इंग्लिश हिंदी मिक्स कर रहा हूँ। आई होप इट्स ओके, सबको ठीक समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। और वैसे भी आप अच्छा बोल रहे थे सब लोग, तो मैं भी थोड़ा अच्छा बोलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपके बड़े हाई स्टैंडर्ड्स हैं तो मुझे भी मेंटेन करने पड़ेंगे। तो इसमें क्या है कि हमारा जो इंडिपेंडेंस का जो हमारे दिल से क्या मतलब है वो उस पर बात करते हैं। तो फर्स्टली आई नीड टू बी कनेक्टेड विद माई कंट्री। अब कनेक्टेड विद माई कंट्री का मतलब क्या है? ऑब्वियसली इट डजंट मीन कनेक्टिविटी इन द डिजिटल स्पेस। इट डजंट मीन दैट आई हैव अ काइंड ऑफ आई हैव सेंट अ फ्रेंड रिक्वेस्ट टू इंडिया और मैं उनका फ्रेंड बन गया फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे और पता नहीं कहाँ कहाँ। वो मतलब नहीं है। कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि मैं मन से कनेक्टेड हूँ, कि मैं मन से इंडियन हूँ और मैं जहां भी जाता हूँ मैं अपनी कंट्री का एम्बेसडर हूँ। और एम्बेसडर किसके आगे हूँ? वो लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनके आगे भी, और जो इंडियंस हैं उनके आगे भी। जो बच्चे हैं मेरे से यंगर, आप कितने भी छोटी उम्र के हों, आपसे छोटा कोई है। अगर आप कल पैदा हुए थे तो आज कोई पैदा हो चुका है। दैट मीन्स देयर इज समबडी यंगर देन यू। सो इफ यू आर गोइंग टू इंस्पायर द यंग टू बी प्राउड ऑफ देयर कंट्री, then firstly you have to be proud of the country.
So to be connected to your nation from the heart means that you do not think of India once in a while. We think of India all the time. चाहे बैकग्राउंड में, चाहे मन में, चाहे एक फीलिंग है कि मैं इंडियन हूं, और वो सभी के अंदर होती है, लेकिन कुछ में ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है. तो पहली बात तो ये है कि उस फीलिंग को हमें बरकरार रखना है और कभी क्रिटिसाइज करना. सेकंड पॉइंट, कनेक्शन हमने बना लिया, लेकिन क्रिटिसाइज अपनी कंट्री को करना कितना आसान है. उसको क्रिटिसाइज करना हमें थोड़ा सा कम करना चाहिए. हमें इंप्रूवमेंट या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरफ जाना चाहिए. You see, the constructive criticism means that this is the problem that our country is facing, and I think this is the solution. Let me put forward a solution to something that I am bringing up. कोई भी व्यक्ति किसी भी मसले के बारे में अगर बात करे तो उसके बारे में उसके कोई हल भी बताए. तो अगर मैं क्रिटिसिज्म ही करता हूं, सिर्फ बुराई ही करता हूं अपने देश की, तो फिर हम कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे. हम बल्कि उसका मूड जो है नेशन का, उसको और खराब कर रहे हैं. और खास तौर पे वो लोग जो आपको देखते हैं, आपको रोल मॉडल मानते हैं. मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, लेकिन एक तरह से आप सभी एज स्टूडेंट्स ऑफ राजधानी कॉलेज, दधीची सोसाइटी, you are all ambassadors of your college, of your society, of your family, of your hometown, या जहां कॉलोनी या विलेज या जहां से भी आप हैं. तो हमें अपना बर्ताव, हमें अपना कॉन्डक्ट क्रिटिसिज्म से भरा नहीं रखना है. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, yes. Let us take an example. We say that the traffic in India is chaotic. ट्रैफिक, बहुत गड़बड़ है, बहुत रश है, बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिक है, रेड लाइट भी क्रॉस करते हैं लोग. तो क्या है कि मैं इसके बारे में या तो मैं कहूँ कि ये तो बहुत ही बुरा है, बहुत गड़बड़ है, मैं लेट हो जाता हूँ रोज, एक्सीडेंट होने का खतरा है, वो देखो वो कैसे चला रहा है, वो देखो वो क्या कर रहा है, वो देखो पुलिस वाला बैठा हुआ है कुर्सी पे, वो कुछ नहीं कर रहा है, या वो करप्ट है, उसके बारे में मैं बात करने लगूं. तो ये मेरा कोई कंट्रीब्यूशन अपने नेशन के प्रति नहीं है. जो चीज आपको नेगेटिव नजर आ रही है उसको हाईलाइट करना कोई काबिलियत की या बहुत ज्यादा कोई आउटस्टैंडिंग बात नहीं है. नेगेटिव चीजों को हाईलाइट करना तो बहुत आसान चीज है. बाहर से किसी भी सिस्टम को क्रिटिसाइज करके पॉट शॉट्स लेना बहुत आसान है. तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमें क्या करना चाहिए उस पे हम बात करें, वो जो है हम उस पे बात करेंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं. So that means I should say that this is what I have been able to do for my country. Let us say traffic. If traffic is what it is, one second please. If traffic is what the problem is, then I should form an NGO. And I should go to the police station and say that I and my friends want to volunteer on Sunday, या जब भी once a month, to help streamline the traffic in this area. आजकल एक सिस्टम ऑफ ट्रैफिक वार्डन्स चला हुआ है, और कई पुलिस स्टेशन या डीएसपी जो लोकल होते हैं ट्रैफिक के, वो वेलकम करेंगे कि स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं. कोई कॉलेज के स्टूडेंट्स इकट्ठे होंगे या प्राइवेट कोई कॉलोनी के स्टूडेंट्स भी, छोटे बड़े. तो हम कुछ कर सकते हैं तो हम बात करें, अदरवाइज रोज रोज स्क्रिप्ट करना कोई फायदा नहीं. और भी बहुत एग्जांपल्स हैं. देश स्वच्छ नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, ये बोलने से कोई फायदा नहीं होता. तो सेकंड पॉइंट एज आई सेड इज टू गिव अप अननेसेसरी क्रिटिसिज्म ऑफ द कंट्री. यू सी व्हाट हैपेंस कि हमें हर चीज पे कोई ना कोई नुक्स नजर आ जाएगा, कोई ना कोई शॉर्ट कमिंग नजर आ जाएगी. हर चीज में, हर फाइल में मैं बोलता था गवर्नमेंट में हमारे पास फाइलें आती, हर फाइल में मैं कमी निकाल सकता हूं, लेकिन मेरा काम कमियां निकालना तो नहीं है सिर्फ. आप में से जो जानते हैं कि ऑडिट क्या होता है, तो ऑडिटर का काम होता है कि वो आके फाइनेंशियली देखे कि सबने ठीक से एक्सपेंडिचर किया है पूरे साल में इस ऑर्गेनाइजेशन ने, नहीं तो वो कमी निकालता है.
वो बोलता है ये आपने ठीक से नहीं अप्रूवल लिया, आपने अप्रूवल लिया 2500 का और आपने खर्च कर दिया 4200, तो ये आपने गलत किया। वो कमी निकालने का उसका जॉब है। सो आई वुड से दैट वी डोंट बिकम अननेसेसरी क्रिटिक्स। ये वैसे भी मेरा एक 7 C's का एक टॉक है जिसमें मैं बात करता हूं कि अननेसेसरी क्रिटिसिज्म का फायदा नहीं, चीयरफुलनेस रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट व्हाट आई वुड से इज दैट वी नीड टू हैव एम्पैथी। एम्पैथी आप सबको पता है क्या होता है, आजकल बड़ा कॉमन वर्ड है। एंड एम्पैथी बेसिकली मीन्स दैट आई डोंट थिंक ओनली ऑफ माई सेल्फ, I put myself in others' shoes and I help others. Now, what am I doing for my country? On Independence Day, if I decide, I will teach 3 or 4 young children in the next 1 year. I will teach these 3 or 4 children who are, let's say, maids' children, or they are street children, or they are beggar children. You have to see, of course, the ecosystem. कई बार beggar children का ये होता है उनके पीछे कोई और होता है। वो मैं डिप्टी कमिश्नर पंचकूला था तो हम लोगों ने बेगर्स को सबको स्कूल में डाल दिया, बच्चों को, और जब वो स्कूल जाने लगे तो माँ बाप से वो लड़ने लगे कि हमें बेगिंग नहीं करनी, हमें स्कूल जाना है, फ्री है स्कूल। और 11-12 साल का या इवन 7-8 साल का बच्चा जो है उसने हिम्मत करके फिर स्कूल जाना शुरू किया। माँ बाप को फाइनेंशियल नुकसान हुआ, लेकिन जब वो लॉन्ग रन में पढ़ेंगे बच्चे तो माँ बाप को ही फायदा होगा। सो बेसिकली, कैन आई डू समथिंग स्मॉल for the society? Can I plant trees? Can I clean up the surroundings? Can I teach some children? Can I spend time with elderly people? एक एनजीओ का एग्जांपल देता हूं, ग्रे शेड्स। नाउ दिस ग्रे शेड्स, आपने कुछ एग्जांपल्स दिए, द यंग लेडी हु वाज स्पीकिंग, एंड ग्रे शेड्स is an organization where 27-28-year-old boys and girls, they help elderly people who are 75, 80, 85, 90 years old. They spend time with them. They volunteer to talk to them, go to their homes. वो उनके जो बच्चे या उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो बिजी है, ये वॉलंटियर उनसे जाके बातें करते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं। एक कम्युनिटी सेंटर में उनके लिए म्यूजिकल प्रोग्राम्स, खुद ही वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, एल्डरली लोग, थिएटर etc. So what I'm trying to say is the third point of empathy is also contributing to your nation, which is India. Fourth point is to become a role model myself. A role model की बात मैंने पहले भी थोड़ी सी touch upon किया. Who is a citizen of India? Mr. X or Miss Y? I would say that Mr. X and Miss Y can become X plus or Y plus. That means that the X plus and Y plus person is able to perform at a level which is better than she or he was doing earlier. That means that I will up my game. अभी तक मैं जो हूं उसमें मैं डोज ऑफ एनर्जी लाके, मोटिवेशन लाके, मैं अपना ही बेहतर वर्जन बन, रोल मॉडल बन। आपने देख लिया एप्पल ने इतने वर्जन्स निकाल दिए, मैं तो सिंपल सा फोन यूज करता हूं, मैं दिखा भी देता हूं। इट्स नॉट अ वेरी हाई फाई फोन, इट्स अ OnePlus फोन, बट बिफोर दिस आई वाज यूजिंग अ सैमसंग फोन। बट पॉइंट क्या है, आई एम नॉट शोइंग ऑफ एनीथिंग, आई एम ट्राइंग टू से कि फोन्स कीप चेंजिंग देयर वर्जन्स, अपग्रेडिंग देयर वर्जन्स। ह्यूमन बीइंग्स आल्सो नीड टू अपग्रेड देयर वर्जन्स। तो अगर मैं अपना वर्जन 6.0 पे चल रहा हूं, I need to go to 11 or 12.0. तो मैं क्या ऐसा ही रहूंगा हमेशा जिंदगी भर, या मैं डिक्लाइन हो जाऊंगा, वर्जन 6 से भी 4 पे आ जाऊंगा वापस? तो कोई फायदा नहीं है ना लाइफ का। तो एज अ रोल मॉडल आई बिकम अ सुपीरियर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। हाउ डू आई डू दैट? फर्स्टली आई बिकम एक्स्ट्रा एंथुसियास्टिक। डल और क्रिटिकल लोग, जैसे मैंने कहा, उनका फायदा नहीं। और ये सेंट ने भी बोला कि रूटीन लाइफ इज नॉट अ सक्सेसफुल लाइफ। और मेरा एक कोट है जो गलती से मैंने एक किताब लिखी थी, नहीं किताब तो गलती से नहीं लिखी, बड़ी मेहनत से लिखी थी, लेकिन वो कोट जो है वो गलती से लिखा गया। वो कोट है, लाइफ इज नॉट अबाउट मार्क्स, लाइफ इज अबाउट मेकिंग अ मार्क। इस पे आप तालियां भी बजा सकते हैं अपने घर में बैठे हुए, कि लाइफ इज नॉट अबाउट मार्क्स, लाइफ इज अबाउट मेकिंग अ मार्क,
which is basically असरदार जीवन के मार्क्स कितने आए, हमारे 94 आए और किसी के 84 आए। अब वो 84 वाला हो सकता है असरदार जीवन ज्यादा जी रहा हो, तो 94 is not a guarantee of a brilliant life. It is basically, of course, marks and achievement, they play a big role. गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल में बहुत फर्क होता है, नो डाउट, लेकिन क्या मैं उसको अपने जीवन को और इम्पैक्टफुल बना सकता हूँ, किस क्षेत्र में, वो मैंने डिसाइड करना है। So apart from my work and career, which is giving me my salary and my revenue and my livelihood, I need to have a passion which helps the society, which makes me contribute more to the society. तो इंडिया का क्या मतलब है? India is a country of people who are very pure if you look at it overall. आपको लगता है इंडिया में बदमाश लोग हैं, गॉसिपी लोग हैं, कंप्लेनिंग टाइप लोग हैं, गलत लोग हैं? ऐसा नहीं है। इफ यू लुक एट अ साउथ इंडियन हाउसवाइफ, अपना सांबर इडली बना रही हैं वो बच्चों के लिए या इवन पड़ोसियों के लिए, जो भी है, और even a North Indian Himachali lady who is 80 years old today, she has not done anything wrong in her life, not even one wrong thing ever. It could be a Delhi wala also. हम दिल्ली वालों को बड़ा ब्लेम करते हैं, मैं भी दिल्ली में पैदा हुआ हूँ बाय द वे, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा जोरदार पर्सनालिटी दिल्ली वालों की तरह बन गई, लेकिन चंडीगढ़ पंचकुला में मैं ज्यादा रहा हूँ। बट द पॉइंट इज कि दिल्ली में भी ऐसे प्योर हार्टेड यंगस्टर्स स्पेशली अभी हैं, जो आगे जाके या तो इधर ढल जाएंगे या उधर ढल जाएंगे, either they go the wrong way or the right way. So I would say that role models will help the youth to go the right way. Who is the role model today? Now if MS Dhoni is the role model, then everybody will be like Dhoni. They want to be like Dhoni. But Dhoni cannot be the role model for everybody. Some people are not passionate about cricket, and then Dhoni retired. So now Surya Kumar Yadav is or Virat Kohli is still around. Somebody has to be the role model for the cricket fan, and they have to be exemplary. 99% सही बात ही करेंगे वो, तभी रोल मॉडल हो। कभी एक आधा झगड़ा कर लिया, कुछ गलती कर दी अपने बर्ताव में, तो फिर वो कोई बात नहीं। Now even a young lady like PV Sindhu, you can see how outstanding she is as a badminton player, and she is a role model. I've never seen her angry. I've never seen her conduct being unprofessional. So we have to find our role models, and you and I have to be role models. तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मैं फोर्टनाइटली कॉलम लिखता हूँ, आप लोग जो नहीं अभी तक पढ़े हो गूगल कर सकते हैं बाद में। विवेक आत्रे रैंडम फोरेज इज माय कॉलम। रैंडम फोरेज, फोरे का मतलब होता है इधर जाना, एक जगह जाना, वो फोरे है। फिर रैंडम मतलब दूसरी तरफ जाना। तो बेसिकली आई राइट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो उन आर्टिकल्स में आपको मिलेगा ये सब कि कैसे हम बेहतर कर सकते हैं अपनी लाइफ में रोल मॉडल बन के, और रोल मॉडल बनने का मतलब क्या है। और उसके अलावा मैं वीडियोस में भी यही बनाता हूँ। आप जो नहीं फॉलो कर रहे अभी इंस्टाग्राम में मुझे या यूट्यूब चैनल को, वो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ये लिखा, लेट अस मेक अ नेटवर्क ऑफ मोटिवेटर्स। अब हम यहाँ पे अगर लेट्स से 30-40 लोग हैं, और हम 30-40 लोग जो हैं, हम इनको और भी लोग हो सकता है कि बाद में इसको देख रहे हो या साथ ही देख रहे हो, तो हम सभी लोग अगर एक नेटवर्क बनाए पॉजिटिविटी का, और हम जाएं सोसाइटी में और हम कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी के लिए, तो आई थिंक वी कैन मेक अ चेंज। वन पर्सन कैन चेंज 1,000 पीपल, and 1,000 people following one person doesn't mean that he becomes a politician. It means that I become somebody who is inspiring. ना जहां तक सिविल सर्विसेज की बात है, क्योंकि अगर मैं सिविल सर्विसेज टच ना करूं और आप एस्पिरेंट्स हैं तो फिर ठीक नहीं रहेगा। तो बेसिकली आई वाज इन द HCS फर्स्ट हरियाणा सिविल सर्विस। दैट टू माय फादर वाज एन IPS ऑफिसर, ही डाइड इन सर्विस, और उनकी जगह मुझे नॉमिनेशन हुआ HCS में, क्योंकि वो 50 की एज में चले गए थे। और मैं इंजीनियर था इलेक्ट्रॉनिक्स में, और मेरा बहुत ज़्यादा कोई चांसेस नहीं थे कि मैं सिविल सर्विसेज में आऊँ, लेकिन मैं HCS में आया, और उसके बाद मैं IAS में प्रमोट हुआ, और IAS में मैं डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, डायरेक्टर IT एटसेट्रा रहा।
और चंडीगढ़ में डायरेक्टर आईटी राज जहाँ ज्यादा नाम हुआ, जो आपने भी जिक्र किया शायद। तो पॉइंट क्या है कि सिविल सर्विसेज एक ऐसा करियर है जिसमें वी कैन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी. I resigned only because I became a motivational speaker. I wanted to do more of motivation than civil services now. But for 25 years I was in the service. 25 years काम किया. 25 years में काफी कुछ सीखा भी, सिखाया भी औरों को, and was able to do a bit of contribution to society and make an impact. So if you are determined on the civil services, you should be an all-rounder. If you are an all-rounder, then you can become a brilliant civil servant. सिर्फ मुझे केमिस्ट्री आती है, मुझे ज्योग्राफी आती है, उससे मैं अच्छा सिविल सर्वेंट बनूं, ये कोई गारंटी नहीं. मैं 99 लेता हूं ज्योग्राफी में, लेकिन मेरा पीपल स्किल्स नहीं है या मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है. कल मैं मालदीव्स के ऑफिसर्स को यही बता रहा था, जब मैं मसूरी में था कल, तो मालदीव्स के 50 के करीब ऑफिसर्स आए, बैच आए, बांग्लादेश से भी आते रहते हैं. मैंने कहा जब आप अपने आप को पीपल स्किल्स नहीं रखेंगे, टेक्नोलॉजी से आप अच्छे ऑफिसर बनेंगे ये कोई जरूरी नहीं. टेक्नोलॉजी आपको आती है, आपको बहुत कुछ आता है, हाईटेक हो गया, या आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट है पेपर वर्क में भी या रिटन वर्ड में, लेकिन आपको एक सिचुएशन संभालने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाना है, तो वो बहुत जरूरी है. तो उसके लिए आपको एक ऑलराउंडर बनना पड़ेगा. तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए आप लोग स्ट्रेटेजिकली करिए, बट आई वुड से कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड. And I would also say, do not give more than 3 years to this. After graduation, don't give more than 3 to 4 maximum years. Okay? 6 साल मत तैयारी करिए. और 3 साल में 4 साल में हो गया तो well and good. और उसके साथ साथ भी कोई करियर बनाइए. आप एक साथ साथ अपनी लाइन में कोई जॉब या कोई टीचिंग या समथिंग यू कीप डूइंग, या कोई कोर्स जिससे आपका मनोबल कॉन्फिडेंस बना रहे. अब ये बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता था. मैंने अपने आइडियाज दिए कि इंडिया के लिए हम क्या कर सकते हैं, और सिर्फ हम ये ना सोचेंगे देश हमारे लिए क्या कर सकता है, हम क्या कर सकते हैं देश के लिए. दैट्स अ वेरी फेमस कोट एज यू नो. आई वुड क्लोज बाय सेइंग द कॉमन मैन मैटर्स. आप और मैं कॉमन मैन हैं, और अगर हम इंडिविजुअली देखें अपने आप को, तो कॉमन पर्सन एज अ यूनिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो अगर हम कॉमन पर्सन के लिए कुछ करेंगे, देश तभी बनेगा. देश कौन है? लोग ही है ना. तो हम कुछ ना कुछ अपने अपने दायरे में सोसाइटी में चीयरफुलनेस, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए कुछ भी करते रहें तो और अच्छा होगा. आपका कॉलेज काफी वेल नोन है, आउटस्टैंडिंग है, और ये सोसाइटी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आई हैव ऑलरेडी स्पोकन बिफोर, वुड बी ऑनलाइन ड्यूरिंग लॉकडाउन, बट वी विल मीट अगेन. And I thank you for inviting me. I have spoken quite long now. If you have any questions, I can see some questions. You can read them out. I'll answer them. Thank you very much. Thank you, sir. Now I'll proceed with the questions. Thank you for your kind emoticons. I can see a lot of them. So, sir, we have the first question. Once Abdul Kalam said, 3 persons played an important role in life: parents, teachers, and leaders. Today's youth were very confused when it comes to choose role models or leaders. So, how should we choose a role model? Actually, we have to follow our heart. You see, as I said, somebody follows cricket, Dhoni is a role model, or Tendulkar is a role model. Even Kohli in many ways is a role model. But I don't have a passion for cricket, then I can't have Kohli as my role model. So it depends on my heart, where am I focused. If I'm a fan of civil services, then you have an IAS officer or IPS officer as a role model. If I'm a fan of NGOs, then maybe Kailash Satyarthi or somebody very young also is your role model. तो रोल मॉडल चुनना अच्छा रहता है, उससे हमें इंस्पिरेशन बना रहता है. और आप लोग की नॉलेज के लिए बता दूं कि कल आपको एक इंस्पायरिंग मोमेंट दे दूं, हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है. कल मैं जब मसूरी में था मालदीव्स के उसमें, उसी टाइम अराउंड फोन अ फ्रेंड जो केबीसी का है उसमें मैं था, फोन अ फ्रेंड में कल के शूट में. तो वो फोन अ फ्रेंड में हालांकि क्वेश्चन इतना टफ था कि मुझे नहीं आता था,
लेकिन मैंने बच्चन साहब से बात की, मैंने कहा सर आप बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वो जो कॉन्टेस्टेंट थी, एडिटर मैडम है कोई, अभी बताना नहीं है किसी को, ये अभी स्क्रीन नहीं हुआ, कुछ दिन बाद होगा। तो वो जो मैडम है उन्होंने कहा कि ये है, तो ये बहुत हाई लेवल का था एंड इट वाज नॉट नोन टू एनीबॉडी। मेरे सर्कल में भी लकीली किसी को नहीं पता था और आगे भी किसी को नहीं पता था और उनको भी नहीं पता था। बहुत ही टफ क्वेश्चन था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इंस्पिरेशन मुझे अमिताभ बच्चन से मिल रहा है ना, तो अमिताभ बच्चन लाइफ लॉन्ग इंस्पिरेशन है। तो कोई ना कोई रोल मॉडल हमारा होना चाहिए। और ये भी आपसे रिक्वेस्ट कर लूं कि अगर ये वीडियो आप स्क्रीन करेंगे यूट्यूब पे तो ये थोड़ा सा ये वाली बात को हटा देना अभी 4 सितंबर तक। डोंट लेट देम सी दैट, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. The next question asks, is leadership quality inborn or natural, or is it acquired? आपकी जो बेसिक क्वालिटीज हैं वो इनबॉर्न भी हैं, लेकिन उनको हम अक्वायर भी कर सकते हैं। आई थिंक लीडर्स कैन बी मेड। आई हैव सीन सम पीपल हु आर वेरी पुअर इन एजुकेशन, दे आर नॉट वेरी स्मार्ट, दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन ग्रेजुअली विद टाइम दे बिकम लीडर्स at a very small level. And I've seen young officers who start out being very shy or very unsure of themselves. Within 5 years or 10 years, they become leaders. They become very confident. So leadership qualities can be acquired. But qualities of head and heart, जो है ना, जिसको बोलते हैं head and heart, it means your basic nature. That normally you're born with, but your family has a lot of role to play. Your friends, your teachers, your peer group. So you shape your personality accordingly. So leadership is more to do with acquired skills, I would say, but also to do with your innate, inherent, inborn qualities. Yes, Thank you, next. sir. We have the next question. Sir, how far a motivation can work for a person if he or she is constantly making efforts but facing failures? Yeah, I'll answer this. I think you missed one or two questions. मैंने एक देखा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। आप देख लेना इसके बाद और कौन सा है। अगर कोई और है तो मुझे इसके बाद बता देना। So motivation basically, you see, we are talking about real life. ये जो क्वेश्चन है बड़ा अप्रोप्रिएट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रियल लाइफ में हम कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कर सकते। रियल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, मुश्किलें आएंगी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आएंगी, करियर प्रॉब्लम्स आएंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी, सोशल प्रॉब्लम्स आएंगी, फैमिली प्रॉब्लम्स आएंगी, और ये सभी ह्यूमन बीइंग्स के लिए। लेकिन एक व्यक्ति जो है वो उनको पॉजिटिवली और मोटिवेटेड वे में हैंडल कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है वो नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ हिज और हर इनर प्रॉब्लम्स। सो इनर जो बैटल है वो हमें जीतना है, अंदर की लड़ाई, मन की लड़ाई। सो माई माइंड इज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन मी, demotivating me, pushing me down, and that is something we are supposed to be doing, which we have to self motivate. तो ये मुश्किलें जब आती हैं तो हमें लो फील करना जायज है, नॉर्मल है, लेकिन आफ्टर 5 years it is not necessary, or even after 5 days कि हम उस बारे में सोचते रहें। So after some problem comes, we get over it, we come out of it, we recover, we motivate and move on. Normal tough life की ही बात कर रहा हूँ, उसी में हमें motivated रहना है। Yes, I think somebody is asking me about the old age home. It's not a home actually. It is basically an NGO which helps people in various parts of Chandigarh. I am talking about Chandigarh, but they are known online. You can check. Grey Shades उनका नाम है, मैं लिख भी देता हूँ, Grey Shades. So Grey Shades is the organization. You can find them on Instagram. उनसे आप आइडियाज ले सकते हैं। उनके फाउंडर है इंद्रप्रीत सिंह, और इंद्रप्रीत से आप आइडियाज लेके you can talk to him. Yes, one or two more. I think there's one more. Shantanu, yeah, tell me the question. Yes, sir. As most of us are preparing for civil services and you have an experience of more than 25 years, will you please share how, as a civil servant, we can contribute towards overall growth of the society? Yeah, we can contribute in many ways.
As civil servants, definitely, I already said what you can do about as citizens. अब as civil servants, हमारा जो दायरा है जिसमें हम posted है, उसमें हम अपना काम ही बखूबी करें, अच्छे से करें, जो भी हमारा mandate है, like director agriculture or director IT, two different roles. So if I'm director agriculture, there are a lot of tasks that the department is undertaking. उसका जो क्रॉप एफिशिएंसी है उस एरिया की, लैंड की जो सॉइल इरोजन चेक करना, फार्मर्स को हेल्प करना, कोऑपरेटिव्स बनाना, डिपार्टमेंट को स्ट्रीमलाइन करना, स्कीम्स जो है उसमें कोई पिल्फरेज नहीं होनी चाहिए. So many things I can do to improve my department and my efficiency of agriculture department. That is my contribution towards the growth of society. And then if I'm in education or IT, how to modernize the department, how to have better transparency, better quality of education. I can contribute to the education of the youth. IT, I can create greater transparency in public service delivery, license, driving license, railway ticket, etc., etc. Issuance of all these. Apart from this, I can also go out of my way. Sometimes you're DC or SDM or you're posted in a particular place. You can really do a lot for the society by starting new campaigns. Like I started something called Adar Samman, respect for the elderly. अभी मैंने ग्रेशियट्स का बताया, लेकिन मेरे अपने टेन्योर में हमने आदर सम्मान शुरू किया था, जिसमें हमने कहा कि जो भी बुजुर्ग आदमी ऑफिस में आएगा इस जिले में, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी. एनी एल्डरली लेडी और जेंटलमैन, मतलब 70-75 से ऊपर के जो लगते भी हैं और हैं भी, उनको हम बिठाएंगे, उनका फॉर्म कोई यंगस्टर भरेगा और उनको असिस्टेंस मिलेगा, उनको प्रायोरिटी मिलेगी, उनको रिस्पेक्ट मिलेगा, हो सके तो उनको चाय का प्याला भी मिलेगा. So this is what we decided, and that was something I could do without. This is not in my duty, but I can do it. So I am contributing towards the welfare of society in a small way. Okay, I think we should close now. Any other point? Yes, thank you, sir. We extend a profound gratitude towards you, Mr. Atray. Your discourse today has not only enlightened us, but also reinforced our understanding of the values that we have towards our nation and how we define our nation. To encapsulate our journey today, I would now like to invite Khushi to share the vote of thanks. Thank you, Aryan. Good afternoon, everyone. It has been such an honor to be a part of such a knowledgeable webinar. On behalf of Dadhichi, the Competitive Society of Rajdhani College, I would like to extend heartfelt gratitude to all the people who not only participated but also made this event impactful and successful. First of all, we would like to extend our gratitude to our distinguished speaker, Vivek Atray sir, for accepting our invitation and taking the time out of his busy schedule to grace us with his presence. Sir, your dedication and passion for guiding the youth of the country and aspiring civil servants is truly commendable. Next, I would like to extend heartfelt gratitude to our principal, Professor Rajesh Giri sir, and the convener, Dr. Barun Kumar Mishra sir, for continuous support and guidance in organizing such more informative webinars and seminars. And I would like to thank and acknowledge the core team who not only planned and executed but also ensured a seamless experience for everyone. And finally, I must thank all the participants for their presence, active involvement, maintaining discipline, and thought-provoking questions. Hoping your further participation and support in upcoming events. At last but not the least, thanks to everyone for joining us today and the society for giving me this opportunity to address you all. Till then, stay tuned to Dadhichi. Jai Hind, Jai Bharat. Just wait a second, sir. So on behalf of please please mute your mic.
Yes. So on behalf of whole society, I want to thank you, first of all, for accepting our invitation. Due to some reason, the principal sir was not able to join us, but on behalf of him, I thank you for the joining the society. And also for delivering this speech. You talked about leadership quality and you talked about empathy. And I hope all my members and all the members of the society will recognize your word and implement your thought in their life. And it will be very helpful for them. And in their coming times, whenever they become a civil servant, they possess a leadership quality as well as empathy. Then only I think they can put a great change in the society. Thank you, sir. Thank you very much. All the best to you all and stay connected. Jai